Hi guys, welcome to BYJU'S Exam Prep. I'm Nivedita Raje and this is a one-shot revision of the exam that is getting conducted tomorrow, MH-CET Legal Aptitude. I'm so sorry we are late. There was a technical issue, not my fault. Anyhow. Hi guys, welcome to BYJU'S Exam Prep. I'm Nivedita Raje and this... Yeah, so did you also hear this? I hope not. Anyhow, so since we are already late, let us just start without wasting any more time because we have much to cover, right? And what is happening? Okay, so this is the agenda of the session. Turns out कि ये भी काम नहीं कर रहा है. Yeah. Okay, so before we start, you should know that we are actually conducting a workshop which is on 23rd of April at 6 p.m. And this is regarding the strategies that you can utilize while you are preparing for CLAT 24. Okay. Also, we have started a comprehensive course for CLAT 24. Now, along with CLAT 24, we have also started the course for CLAT 25 as well, just by the way. So, the comprehensive courses for CLAT 24 and 25 both are running on the BYJU'S Exam Prep portal. Now, these are comprehensive courses in a way that they cover not just CLAT but they cater to all other exams as well which are not CLAT. Hi, come on. हो जाती है technical परेशानियाँ. Okay, now the minimum gap permission between two sessions of the parliament is, ये सारे के सारे questions are previous year questions. They have been asked not once, multiple times in various exams. और इन सारे non-CLAT exams, not just MH-CET, we are also talking about SLAT, we are talking about जामिया, we are talking about बनारस BHU जो अब QCET में आ गया है. ये सारे questions और MH-CET में तो 2-3 बार पूछा जा चुका है. Right, so the minimum gap permissible between two sessions of the parliament is 4 months, 6 months, 100 days, 90 days. Anyone? Everyone says B. Are you completely sure? 6 months? Are you saying 6 months? The answer is 90 days. It is 3 months. I'm so sorry. Wait. It's 90 days. 3 months का gap होता है. भाई 6 महीने 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के पूरे साल में. ठीक है. There are 3 sessions of parliament in the entire year. First is autumn, then is winter, then we have budget session. 3 महीने का gap जरूरी है. 6 महीने में तो फिर 2 ही हो पाएंगे. Right. So the minimum is 90 and the maximum is 6 months. हम मिनिमम जान रहे थे. ओके, प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा जाए. सो ये अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, प्लीज डू नॉट मेक मिस्टेक्स. मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ध्यान रखना. वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम गैप. द मिनिमम गैप इज 3 months. दैट इज परमिसिबल. द मैक्सिमम दैट कैन गो अबव इज 6 months. Okay, moving on. बहुत सारे questions हैं. I won't be pondering on one single question for a long time. Question number 2. The Council of Ministers remain in office as long as they enjoy the confidence of who? Council of Ministers की बात हो रही है. They remain in office as long as they enjoy the confidence of anyone? Yes, people, hurry up. प्रेसिडेंट, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, नन ऑफ दीज. इनमें से कोई भी नहीं. यस सेशा. कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा. आर यू 100% श्योर? रियली? कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा? द करेक्ट आंसर इज यस, लोकसभा. लोकसभा का कॉन्फिडेंस जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंजॉय करते हैं तब तक गवर्नमेंट बनी रहती है. जैसे ही कॉन्फिडेंस लूज होता है वैसे ही गवर्नमेंट गवर्नमेंट गिर जाती है. इसी को सरकार गिरना कहते हैं. और ऑपोजिशन भी कॉन्फिडेंस को प्रूव करने के लिए अक्सर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करता रहता है. सो दे हैव टू प्रूव देयर मेजॉरिटी, दे हैव टू प्रूव देयर कॉन्फिडेंस अ नंबर ऑफ टाइम्स, अदरवाइज दे वुड हैव टू लीव देयर पोस्ट. ओके.
Question number 3. Whoever drives a vehicle is legally bound to take reasonable care of that vehicle. Principle. ध्यान से. Whoever drives the vehicle is legally bound to take reasonable care of the vehicle. A person gave his vehicle to repair. Okay, a person gave his vehicle to repair. X. The owner of the workshop is testing the speedometer, hits a vegetable seller. Who is responsible? X is responsible to the owner of the car. X is liable as he asked the owner to take care. Both X as well as owner. X is liable on account of negligence. Are you sure? Completely? D? You think it is D? Yes, it is D. X is accountable on X is liable on account of negligence. It is X who's driving the car, so according to the principle, it is the responsibility of X, yes, to be reasonably aware of what he's doing. D is the correct answer. Moving on, question number 4. Person is not entitled to damages when he acquiesces to the act which caused injury to him. कौन सा प्रिंसिपल है ये? This is voluntary non-fit injuria. ध्यान रखना है इसको. Okay. I might be pronouncing this word wrong. क्लास के बाद में देखूंगी इसका correct pronunciation क्या होता है. A snake charmer was showing snake dance on the street. B stopped and also joined the gathering. Snake bit B. Who is liable? This is a very common question. It has been asked over and over, even in judicial services for that matter. Snake charmer will not be liable because B voluntarily stopped and started observing the snake dance. Snake charmer will be liable because simply stopping to observe doesn't signify consent to injury. Snake charmer will not be liable because snake bite is not an injury. Snake charmer will be liable because snakes are venomous, hence making the owner strictly liable for the behavior. Wow. Yes. What do you think? पहले तो ये डिसाइड करो कि लाइबिलिटी है या नहीं है. देखो लाइबिलिटी नहीं है, यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं है, तो फिर बी और सी तो कट ही जाते हैं, राइट? ये फिट नहीं बैठ रहा. ए सीम्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट. लेट अस सी इफ वी आर करेक्ट, एंड वी आर. ओके, डिड यू सी व्हाट आई जस्ट डिड? दैट्स हाउ यू आर going to solve the questions in all the exams, not just MH-CET. ये तरीका क्लैट में भी काम आता है. To whom the Speaker of Lok Sabha has to address his resignation letter. लोकसभा का स्पीकर अगर रिजाइन करना चाहता है तो उनका रेजिग्नेशन लेटर किसको एड्रेस करेगा? CJI, डेप्यूटी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट. Yes. What do you think? The answer would be anyone, everyone actually. CJI को करेगा? CJI को क्यों ही करेगा? What does Lok Sabha have to do with CJI anyway? Right? Legislature और judiciary दो separate organs हैं, तो उनमें ये resignation का connection भी नहीं आ सकता, तो CJI तो कट है. ठीक है. Again, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव भी अलग अलग ब्रांच है. लोकसभा और प्रेसिडेंट, हालांकि पार्लियामेंट में तो एक ही है, बट फिर भी प्रेसिडेंट को करेगा या नहीं करेगा? आर यू कंप्लीटली श्योर? डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा. आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ बीस. लेट्स सी इफ वी आर करेक्ट. आई मीन इफ यू आर करेक्ट. यस, यू आर. चलो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. अगर सीजीआई रिजाइन करना चाहते हैं तो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन किसके पास जाता है, किसको एड्रेस करता है? एनीवन? ध्यान रखना इस चीज को. प्रेसिडेंट. सीजीआई का लेटर ऑफ रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को जाएगा. प्रेसिडेंट का लेटर ऑफ रेजिग्नेशन सीजीआई को जाएगा. ओ सॉरी, नहीं, सीजीआई को नहीं, वाइस प्रेसिडेंट को जाएगा. माय मिस्टेक. वीपी को जाएगा. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर का लेटर ऑफ रेजिग्नेशन किसको जाएगा? दैट इज योर होमवर्क. फाइंड आउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स. ओके, यस, मूविंग ऑन. Trespassing doesn't require intention. ठीक है, as long as a person enters into another property without a lawful justification, it is trespass. So whether or not you did anything doesn't matter. You just need to have entered the property without
the consent. Okay, so M strolling park adjacent to Z's garden. It has no boundary. M's eyesight is weak. He walked into Z's garden, scaring the rabbits that were gazing there. Is M guilty of trespass? Is he guilty of trespass? I corrected myself. I said vice president. Almost immediately. एम पार्क में स्ट्रोल कर रहे हैं जो कि जेड के गार्डन के एडजेसेंट है. जेड के गार्डन पे कोई बाउंड्री नहीं है. एम गलती से घुस गए हैं, उनकी आईसाइट भी कमजोर है और उन्होंने रैबिट्स को स्कैर कर दिया है. तो क्या ट्रेसपास होगा? सी, सब सी. एक्चुअली इसका आंसर ये है. यू आर राइट, इट इज ट्रेसपास. ऑब्वियसली यहाँ पे डज नॉट रिक्वायर इंटेंशन, तो ये तो हो ही नहीं सकता. आंसर गलत है. ठीक है, जो एम ने किया है, भले ही वो जो भी कुछ हुआ है, ही एंटर्ड अननोइंगली, ही डिड नॉट रियलाइज व्हाट ही वाज डूइंग, इट विल स्टिल बी ट्रेसपास. बट ही कैन अवेल अ डिफेंस, जिसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहते हैं. ठीक है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज अ डिफेंस ही कैन अवेल, बट लाइबिलिटी ट्रेसपास की होगी. तो बी सही नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर. गुड. How did I miss it? Any person who provides service to others is bound to ensure that service is without any deterrent or deficiency. Okay. Kailash, what name is this? Kailash and his wife went for a stroll. Wife fell down due to uneven arrangement of bricks of the pavement which was badly constructed. Kailash wants to sue the corporation for her injury. Will the corporation? Even if it has no boundary, he can avail. That's what I said. He can avail the defense of mistake of fact. Defense properly apply कर रहा है, लेकिन trespassing फिर भी है. Okay. Trespass तो trespass होता है. तुम्हें पता था boundary है या नहीं है, कोई बात नहीं. Law तुम्हारी इस contention को admit करेगा. Liability तो है. There is a reasonable cause of action. Success as the corporation is liable. Success only because of financial condition. Failure, this is a petty case for huger corporation. Failure, service provider can be expected to always be good. It is A. Yes, the corporation will be liable. Question number 8. Fundamental right have been declared in which part of the constitution? 1, 2, 3, 4. बहुत important है, हमेशा पता होना चाहिए. ठीक है, you should always remember this. It's 3. ठीक है. पार्ट 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप. Okay. And part 1 basically declares the sovereignty of Indian territory, etc. चलो आगे बढ़ते हैं. C is part 3. Okay. Question number 9. Even if a person suffers a loss, he will be entitled to receive compensation only if a legal right is violated. ठीक है, this is the entire premise of tort law, isn't it? Unless a legal right is violated, a person cannot have a cause of action. ठीक. So fact, a famous math teacher of X school left the school due to rifts with the management, started a new school very close. Many students left school, joined the new school, suffers a huge financial loss, sues the new school for compensation. Union and the states, Shambhavi is absolutely right. So part 1 deals with the union and the state, part 2 is citizenship, part 3 is fundamental rights, 4 is DPSP, 4A is fundamental duties, 5th is executive. Actually union, judiciary भी आ जाता है उसमें. Yes, बताओ जल्दी से. ये रहे ऑप्शंस. School will not succeed as there is no violation. School will ask to be shut down, etc., etc.
इट इज डैमनम सिन इंजूरिया, वेरी वेरी क्लियरली ग्लाउचेस्टर बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, स्कूल विल नॉट सक्सीड। किसी लीगल राइट का तो वायलेशन हुआ ही नहीं, तो कंपेंसेशन कैसा, राइट? चलो मूविंग ऑन। द ओथ इज एडमिनिस्टर्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय, शपथ कौन ग्रहण करवाता है प्रेसिडेंट को? शपथ ग्रहण समारोह, राइट? सो द ओथ इज एडमिनिस्टर्ड टू हु? सो टू बाय हु? Whom actually? The Speaker of the Lok Sabha, Prime Minister of India, Attorney General of India, or the CGI? Yes, very good. D is absolutely correct. CGI President को oath administer करवाते हैं. Now, CGI को कोई oath administer करवाता है? देख सोच के बताना. चलो. An Indian citizen committing an offence punishable under IPC in any other country will be liable to be tried in India. Why? Criminal law, IPC especially, has an extraterritorial jurisdiction. So if you are an Indian and you commit a crime outside India, you would still be liable. And if there is a person who is not an Indian but he commits a crime towards India by using some technology, etc., and he would also be liable. ठीक है. Mr. Vaibhav, citizen of India, commits a murder in US, which is not an offence in US. In the present case, will he be liable? Mr. Vaibhav is guilty of murder, can be tried in India, irrespective of the fact that murder is not an offence in US. Mr. Vaibhav is not guilty of murder in India because it is not an offence, is not guilty because it was not committed in India, none of the above. Principle के हिसाब से सीजीआई को ओथ एडमिनिस्टर प्रेसिडेंट करवाता है. क्वेश्चन ये है कि क्या सीजीआई ओथ एडमिनिस्टर करते भी हैं? इज देयर इवन एन ओथ टेकिंग और ओथ एडमिनिस्ट्रेशन सेरेमनी ऑफ सीजीआई? हैव यू एवर हर्ड ऑफ सच थिंग? A, yes. So even though what he has done is not an offence in that current state, it is still an offence in India and hence he will be liable. Right? So A is the correct option. कि murder भले US में offence ना, IPC में तो है भाई. An offer can be accepted only when the acceptor has knowledge of such offer. Offer तभी accept हो सकता है जब acceptor के सामने offer की knowledge हो. Very simple. Mr. Arpit offers to pay a reward of 10,000 to anyone who finds his watch. Mr. Mithilesh, without knowledge of the offer made by Mr. Arpit finds and returns the watch. अब मुझे बताइए कि Mr. Arpit ऑफर को या फिर रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते हैं कि नहीं. Now this is seriously or this is actually based on a very famous case, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, राइट? तो अब मिस्टर अर्पित ने वॉच तो फाइंड कर ही ली, ऑफर की कंडीशंस को या प्री रिक्विजिट्स को फुलफिल कर दिया, लेकिन ऑफर की नॉलेज के बिना ही डिड ऑल दैट. सो विल ही बी एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड? द आंसर इज नो. सो विच एवर ऑप्शन से कैन of course is wrong. Can't wale option. Mr. Mithilesh can't claim the reward as offer made by Arpit was frivolous. This option is frivolous. Mr. Mithilesh can't claim the reward because he didn't have knowledge of the offer made by Arpit. So C is the correct option. Very good. Moving on. If the spouse has not been heard of as being alive for a period of at least 7 years by such individuals who would have heard about such spouse, he or she were alive, then the spouse who's alive can obtain judicial decree of divorce. This is called presumption of death, which is given in section 108 of Evidence Act, right? तो A was deputed to a foreign nation. ध्यान से पढ़ना इसको. A was deputed to a foreign nation in lieu of work on 2012. His wife married C in 2020 while A was serving in his deputation. Marriage void है या valid है? Presumption of death का मतलब है एक आदमी 7 सालों से गायब है. Person is unheard of. For 7 years, nobody knows where he is, especially the people who generally should have an idea कि ये आदमी कहाँ होगा. अगर उन लोगों को भी नहीं पता वो कहाँ है, he has vanished from the face of earth for 7 years, nobody knows about his whereabouts,
then law will presume him to be death. तब डिक्री ऑफ डिवोर्स ली जा सकती है. इनफैक्ट विडो हो जाती है लेडी, ठीक है, क्योंकि लॉ उसे डेड प्रिज्यूम कर लेता है. सो द लेडी इज प्रैक्टिकली अ विडो. इस पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वाइफ, जुडिशियल प्रेसिडेंट, समथिंग दैट वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट. यहाँ पे मैरिज वॉइड है कि वैलिड? यहाँ पे मैरिज वॉइड है. इट्स वेरी सिंपल. द मैरिज इज वॉइड. मैरिज किसकी हुई है? ए इज देन वाइफ, बी मैरिड सी. बी और सी की मैरिज है, तो बी और सी की मैरिज वॉइड है, क्योंकि भाई वो फॉरेन डेप्यूटेशन पे गया है, सबको पता है वो कहाँ गया है, गायब नहीं हुआ है. Just because he is in foreign, because without obtaining divorce, she cannot remarry. So C is the correct option. Confusion. Term and condition are uncertain in a word agreement. Agreement to sell present goods, called sale agreement. To sell future goods, called agreement to sell. Okay. A trader in edible oil agrees to sell 300 liters of oil 3rd November at the prevailing market rate. The same was published by Times of India of that day. Agreement is uncertain regarded the price. There's some problem in this question. See if you can answer it. Can you answer it? प्राइस के रिगार्ड में क्या ये अग्रीमेंट प्रिंसिपल और फैक्ट मैच नहीं कर रहे हैं? We are not doing this question. It's too confusing. Okay, let's move on to another one. Question number 15. State shall not make any law which takes away or abridges the fundamental rights, and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void. Okay, this is Article 13. Government of Westeros came up with a law which made discrimination on grounds only of religion valid. Therefore, a person can now be discriminated based on his religion. This law was challenged in the court, and the court held the law void. From the options given below, provide which of the following reasoning will justify court's judgment. Very hefty, but let's see the options. Law was inconsistent with fundamental rights, was not inconsistent, was inconsistent with fundamental duties, inconsistent with DPSP. There is just one option which is correct, and it is yes. ठीक है, law inconsistent है और पूरी तरह से है. It is very evident. Fundamental rights से law inconsistent नहीं है, ये गलत है. Fundamental duties की बात ही नहीं हो रही, DPSP का कोई mention नहीं है. Right, so A is the correct option. Yes. It violates fundamental right of equality. It violates actually Article 14 and 15 both. And also, no, not 25. Okay, question number 16. Delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them is called what? Pledge, mortgage, sale, bailment. ध्यान से, बहुत ध्यान से आंसर करना है इसको. The delivery of goods, delivery हो रही है by one person to another for some purpose, there is a purpose, upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction. Now this kind of contract is called what? Pledge, mortgage, sale, bailment. Hurry up, jaldi se. The correct op, yes, very good. It is called bailment. Purpose specify nahi kiya hai, so in general scenario it will be called bailment. If the purpose is to secure a loan on an immovable property, we would call it mortgage. If the purpose is to secure a loan on a movable property, we'll call it pledge. But एक general scenario में category wise we'll call that contract bailment, right? Moving on. Dash can be issued by the Supreme Court to order government authority to perform its statutory duty.
कौन सी रिट है इनमें से जो कि इशू करता है सुप्रीम कोर्ट टू अ गवर्नमेंट अथॉरिटी और अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म देयर ड्यूटी? इज इट हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन और नन ऑफ दीज? इट्स वेरी इजी. And the correct answer, I think Mahima is the first to answer. Yes, it is mandamus. Mandamus का literal मतलब ही we command होता है. So a command issued by a judicial authority or the apex judicial authority to a public authority to do what they're supposed to do. That is what the writ of mandamus is. This is W, by the way. I don't have a good handwriting. Habeas corpus is produce the body. So it is an order against illegal detention. Prohibition is something else. Prohibition is an order issued by a higher judicial authority to a lower judicial authority to, in the middle of an order or a judgment, to stop proceeding with that judgment. तो जजमेंट को बीच में ही रोकने का ऑर्डर प्रोहिबिशन होता है. देखो यहाँ से आगे मत बढ़ो, यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते तुम, ये तुम्हारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है. राइट? ओके, moving on. 18. No child below the age of 14 years shall be employed in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. This is Article 24. X was a 7-year-old child. His father's friend was the owner of pesticidal plant. Since X aspires to set up his own pesticide plant, he asked B to employ him. B employed him. C, a human rights activist, moved the court against B. Stay order. No. Prohibition is permanent. Like it completely, cancels that case and all the proceedings that have happened before the order of prohibition. Stay order is a temporary order issued by the judicial institute to a private individual to stop them from what they're doing until the case is disposed. जैसे लेट्स से दो प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी के ऊपर आर्ग्यूमेंट है और बी के बीच में, और आर्ग्यूमेंट है कि प्रॉपर्टी किसकी है, और अब ए जो है वो उस प्रॉपर्टी पे घर बनवाने लगता है. इट्स अ प्लॉट ऑफ लैंड, राइट? और बी कहता है अरे तुम घर नहीं बनवा सकते, अभी मेरा प्लॉट है ये. अब जब तक ये डिटरमाइन नहीं हो जाता कि प्लॉट किसका है, उस प्लॉट पे किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है, तो उस कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए बी को ऑर्डर दिया जा सकता है, स्टे ऑर्डर, स्टॉप द कंस्ट्रक्शन और स्टे द कंस्ट्रक्शन. दिस इज कॉल्ड इंजंक्शन. इट इज कॉल्ड एन इंटरिम रिलीफ. और ये एक प्रॉपर एडजुडिकेशन के लिए, ये एक प्रॉपर रिलीफ के लिए किया जाता है, सो दैट राइट्स कैन प्रॉपरली बी डिटरमाइंड विदाउट एनी अदर एनकम्बरेंस. ओके, so this is the question. These are the facts. B is liable because he has employed a child in his factory. Not liable because X will set up a plant in future. Not liable because his intentions were good. Not liable because a pesticide plant is not hazardous. Is pesticide plant hazardous? The question, is it hazardous? Of course it is. A. ठीक है. B is a child, he is 7. बड़े हो गए ना, मैं पेस्टिसाइड प्लांट खोलना चाहता हूँ, अंकल मुझे पेस्टिसाइड प्लांट में रख लो. Of course not. So anything that involves chemicals or toxic waste is considered hazardous. Pesticide factory contains a lot of it, so it is definitely hazardous. Article 24 is violated no matter how noble the intentions were. 19. Every agreement in restraint of marriage of any person other than minor is what? Void, voidable, valid, legal. ये दोनों सिनोनिमस होते हैं बाय द वे. ठीक है, void और voidable एकदम अलग होते हैं. So the correct answer is yes. Very good. Yes, it is void. It's completely void. Any agreement that puts a restraint on marriage or stops a person from getting married is void. It is a direct violation of Article 21, and in multiple case law Supreme Court has held that right to marry is in fact a fundamental right. Okay,
वी आर नॉट कंसर्न विद सेक्शन, सेक्शन पूछा भी नहीं जाएगा, बहुत फार फेचड पॉसिबिलिटी है कि सेक्शन पूछ लिया जाए, कौन से सेक्शन में होता है ये, इट्स एक्चुअली 26। सेक्शन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, गलती से अगर पूछ लिया गया आई वुड सजेस्ट जस्ट लीव द क्वेश्चन, नोबडी वुड नो द आंसर ऑफ इट, या फिर वही गेस वर्क कर सकते हो, MH-CET में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। An agreement to do an impossible act is void. Mr. Rajni agrees with Mr. Bala to discover treasure by magic. Okay, the act is not void because the act is capable of being performed. Act is not void because it is not forbidden by law. Act is void because the agreement to discover treasure by magic is impossible of performance. What do you think? Obviously, yeah. You must be thinking, ma'am, इतने easy questions आएंगे क्या एग्जाम में? Trust me when I say this, the answer to this question is yes. MH-CET legal reasoning बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है, ठीक है। एक्चुअली वैलिड और लीगल के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। अगर वो आपसे लीगैलिटी पूछ रहा है कि लीगल है तो फिर जवाब लीगल होगा, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैलिड है और आंसर वैलिड होना चाहिए तो जवाब इनवैलिड होगा, ठीक है। सो यू आंसर अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इन फैक्ट द क्वेश्चन इज आंसरिंग, आस्किंग। जनरली थोड़े डिफिकल्ट कहाँ से लाऊं, ये सारे MH-CET में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर अच्छे से क्लैट और MH-CET अलग अलग एग्जाम्स हैं, और क्लैट का लीगल इस बार काफी इजी था, पिछली बार का मतलब इस बार का देखते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। एक्चुअली MCQs थोड़े से ज्यादा होते हैं कंपेयर टू प्रिंसिपल फैक्ट, कुछ कह नहीं सकते, तो MCQs भी होते हैं, तो MCQs हैं इसमें, प्रिंसिपल फैक्ट अकेले नहीं है। ओके, पार्टनर्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ध्यान से, पार्टनर्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ओके, A, B, C, D are partners, they are in their partnership deed, and they in their partnership deed agreed that A is authorized to admit his son S into the partnership when S attains the age of 18. A nominated S on a partner and S agreed to become a partner. B, C, D ने बाद में मना कर दिया कि हम S को पार्टनर नहीं मान रहे हैं। ओके, ये तो सही है, ऐसे थोड़ी होता। S will become a partner because his father is the most reputed partner of the four. How do we know that? How can we conclude this? So this is clearly wrong. S is not a partner since 3/4 of the partners are against S becoming partners. Now they are. But what about the condition that is there in the partnership deed, in which they did agree that S will become a partner as and when his father decides. So once you have made it, or you have declared it in a written format, and then you're declining what you have already written. So obviously जो तुम कह रहे हो तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, S will become a partner of the firm. It is a written covenant. So yeah, D is correct. A person shall be liable for commission of omission of an act which he can foresee would injure his neighbor. Commission or omission, sorry. ठीक है, okay. पर्सन लाइबल कमीशन या ओमिशन के लिए तभी होता है जब उसे पता होता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ उससे किसी को चोट लग सकती है। फोर्सिबिलिटी इज अ कंडीशन। फोर्सिबिलिटी से आप नॉलेज इंप्यूट कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स से देयर इज अ पर्सन हु इज ड्राइविंग ड्रंक ऑन द रोड। नाउ ही इज ऑब्वियसली नॉट ड्राइविंग टू प्ले अ गेम, और ही इज नॉट ड्राइविंग टू किल somebody, he is just drunk, he is careless, he is reckless. Now obviously if somebody dies or somebody gets hurt, he cannot be made liable for the direct injury, like you are liable for the murder because you wanted to kill him. No, he did not. But forcibility है कि मैं शराब पी के सड़क पे गाड़ी चला रहा हूँ, किसी को चोट लग सकती है, और ये forcibility नॉलेज में डिराइव हो जाती है, और इसी नॉलेज के बेसिस पे क्रिमिनल लाइबिलिटी को अटैच कर देते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फैक्ट्स है, एज नेबर चेस्ड एज क्या A's neighbor chased A's dog with a stick out of the fear. Dog bit him. There's something seriously wrong with this.
A is liable for his dog's behavior. Neighbor is liable for harming the dog. A is not liable. Neighbor should shift to a different place. What do you think? It is C, obviously, yeah. भाई मुझे क्या पता था, तो मेरे कुत्ते के पीछे पड़ जाओगे और फिर उसे हर्ट करने की कोशिश करोगे, बेचारा जानवर क्या करेगा? ठीक है, दिस इज अनफोर्सेबल, सो देयर इज नो लाइबिलिटी. सी इज करेक्ट. Willful rash driving is an offense. Yes, I think it is an offense, if I am not wrong, under section 278. ठीक है, मैं गलत हो सकती हूँ, अब मुझे वो सेक्शंस उतने अच्छे से याद नहीं रहे, बट 278 ही है शायद. Mr. Tiwari was driving his car after drinking alcohol. Police books him for willful negligent driving. Is the act of police lawful? Mr. Tiwari driving car after drinking alcohol. Willful negligent driving, willful rash driving एक offense है. ठीक है, तो मिस्टर तिवारी की गलती है? No, because Tiwari was not driving rashly, he was drunk while driving. This is not a negligent act. Because Mr. Tiwari was driving rashly, yes, police has the power to arrest a person driving rashly. Options थोड़े से हैज़ार्ड हैं, लेकिन मिस्टर तिवारी की लाइबिलिटी होगी नहीं, क्योंकि फैक्ट से ये नहीं समझ आ रहा कि वो रैश भी चला रही थी. वी ओनली नो दैट ही वाज, सेक्शन नहीं पूछेंगे, वी ओनली नो दैट ही वाज ड्राइविंग ड्रंक. वेदर और नॉट ही वाज ड्राइविंग रैश इज नॉट क्लियर, सो वी कैन नॉट जस्ट अज्यूम एनीथिंग, राइट? सो नो, of course not. The section under which he is booked will not be an offense. He was volunteer. Yes, there are, of course, there are sections not under IPC. IPC is when you commit a crime. So driving drunk is not a crime. It is more like a civil offense, right? So you would be booked under Motor Vehicles Act. चालान वालान कटेगा, लेकिन आईपीसी का कोई सेक्शन नहीं है. रैश चलाने पर है सेक्शन. ठीक है, ए इज द आंसर, बाय द वे. 24. Subject to public order, morality and health, all people are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion. Public order, morality and health, इन तीनों को रेस्ट्रिक्शन मानते हुए या फिर इन तीनों को ध्यान में रखते हुए एक आदमी अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को किसी भी तरह से प्रैक्टिस, प्रोफेस या प्रोपगेट कर सकता है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25, people belonging to X community filed a PIL in the Supreme Court to prohibit people belonging to Y community from wearing black color while offering prayer in their locality because they considered black color evil. Wearing black color is an essential practice of Y community. Decide. Okay, so people belonging to Y community need to stop offering prayer. मतलब उन्हें prayer ही खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि काला X community के हिसाब से शैतान का साइन है. People belonging to Y community have all the right to offer prayers in black clothes. People belonging to Y community have a right to freely profess, propagate the religion. Both B and C. काफी ऑब्वियस आंसर नहीं है इसका. डी है इसका आंसर भाई, दोनों ही सही हैं. इट्स डी. दे डेफिनेटली हैव द राइट. ऑफ कोर्स, बाय वेयरिंग ब्लैक दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग as against public order, morality and health. They're just wearing black and it's okay. Yeah. Question number 25. Every promise and every set of promises forming the consideration of each other is what? You should know it. It's important. Is it an agreement, a contract, consideration, or an acceptance? कुछ repeat होंगे, क्योंकि like I said, they're taken from previous year question papers. I think I have done a few previous year question papers के questions. So not all are done. No, they are not all done. These questions are done. एक आध दो होंगे उसमें से जो हो चुके होंगे. ये बताओ ना, इसको करो. Yes, it's A. It's an agreement. Going by that analogy, you should not get any question wrong.
right? So it is an agreement, offer, acceptance, right? So when an offer is accepted, it is called a promise. Every promise is an agreement, and when an agreement is valid as per law is called a contract. ठीक है? Or when an agreement becomes legally enforceable, we call it a contract. ठीक है? So this is A. A is the correct option. Master is liable for the acts of a servant done in the course of employment. Danny was a driver working for Stud, lived in his premises. Danny, ये तो हम कर चुके हैं वाकई. I also remember it. Danny beat his wife one day. Is Stud liable? कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब अग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल हो जाता है. हाँ, कुछ क्वेश्चंस आई अंडरस्टैंड, कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे बच्चे. लाइक आई सेड, दीज आर क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. नो, तो कुछ मैं करवा चुकी हूँ, कुछ नहीं करवाए हैं, कुछ बाकी एग्जाम्स को भी कवर कर लिया है. सो इट विल बी अ मिक्स. इट्स ओके. इज स्टड लायबल? स्टड इज नॉट लायबल. ठीक है, इट इज अ पर्सनल एक्ट. इट इज नॉट डन विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो स्टड इज डेफिनेटली नॉट लायबल. Question number 27. The concept of joint liability comes under section 34 of IPC. States that when a criminal act is done by several people in furtherance of common intention, each of such person will be liable in the same manner as if it were done by him alone. Second is, a person abates an offence who abates either the commission of an offence or the commission of an act, which would be an offence if committed by a person capable of law of committing an offence with the same intention or knowledge as that of the abater. Third, a criminal conspiracy takes place when two or more people get together, plan to commit a crime, then take some action toward carrying out that plan. The action taken does not have to be a crime itself to further the conspiracy. 3. Difference between common intention, similar intention. Why don't you ask during the class? I'll teach it to you during the class. Okay. These are the options. Jason Derulo conspired to poison John. Jason, in pursuance of the conspiracy, procures the poison, delivers it to Derulo so that he may administer it to John. Derulo, in pursuance of the conspiracy, administers the poison in the presence of Jason, causes John's death. दोनों ने क्या क्राइम कमिट किया है? I am audible. Am I not audible, guys? चलो. Has committed the offence of murder and Jason was an abettor. Both Jason and Derulo have committed the offence of criminal conspiracy. Jason has not committed any offence. Both Jason and Derulo have committed the offence of murder. Yes? What do you think? They have committed the offence of criminal conspiracy. देखो murder तो किया ही है उन्होंने. Of course it is murder. Going by what has happened in the entire case, they have definitely committed murder. But murder is not the principle that is being talked about. अगर आप देखें पीछे, कोई गड़बड़ है इस क्वेश्चन में. Abets an offence, we are talking about, okay, सारे principle पढ़ लेते हैं. Oh, this is confusing. The first principle talks about common intention. Second principle is talking about abatement. And the third is talking about criminal conspiracy. Now they are liable for murder, obviously, and 34 तो admit हो ही जाएगा, and they're also liable for criminal conspiracy. But murder is really not talked about in the principle. ये question, इसके options गलत हैं. They're not correct. ये भी MH-CET का ही question है. Moving on. This is not correct.
Anyhow, question number 28. Malice in law means an act done wrongfully without reasonable and probable cause. Malice in fact refers to performance of an act which may be legal but with ill will or hatred or bad intention. Option. अच्छा पहले तो fact ही है, पढ़ लीजिए please. Bellatrix known to be whimsical, reckless, rather crazy. She always did things, etc. हाँ पिछली बार कराया था और पिछली बार भी मैंने इसे छोड़ दिया था. ये MH-CET का पुराना क्वेश्चन है. क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं है तो you know people might end up writing not that accurately. So yeah. Shall we move on to the options? पढ़ लिया सबने? Bellatrix will be liable because she acted out of malice. Bellatrix did not act out of malice because she did not know who the owner of fishery was. She is liable because she poisoned the fishery. Will be liable because she acted wrongfully. रिचा यहाँ पे इंटेंशन तो है but it would more because he got poison instead of sugar. That is a very interesting question actually. It's a very important question. लेकिन sugar मिला दी, it will not be an attempt also. क्योंकि जो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो एक्चुअली टॉक्सिक था भी नहीं, तो अकॉम्प्लिशमेंट भी होता ही नहीं. अकॉम्प्लिशमेंट अगर किसी वजह से अधूरा रह गया तब वो अटेम्प्ट की कैटेगरी में आता है. एंड पीपल कैन नॉट बी पीनलाइज्ड फॉर प्रिपरेशन और इंटेंशन अलोन. He will not be liable. The person who administered sugar in place of poison will not be liable. अगर वो पॉइजन दे देता और पॉइजन से के कंजम्पशन के बाद भी विक्टिम बच जाता तो इसे हम अटेम्प्ट कहते हैं. इस तरह के ऑफेंसेस अटेम्प्ट की कैटेगरी में आते हैं. जब किसी वजह से या किसी इंटरफेरेंस की वजह से अकॉम्प्लिश नहीं हो पाया क्राइम, आप जो चाहते थे वो कंप्लीटली नहीं हो पाया, तो यहाँ पे इंटेंशन है लेकिन प्रिपरेटरी स्टेज पर ही गड़बड़ हो गई है. हाँ लेकिन शुगर पी के भी कुछ हुआ थोड़ी होगा. ऐसा थोड़ी शुगर पी के उसने कहा मैंने तुम्हारी चाय में जहर मिला रखा था और प्लेसिबो इफेक्ट आ रहा है, शुगर पी के उसने अपना दिल पकड़ लिया, शिट मुझे हार्ट अटैक आ रहा है. फिर यूट्यूब बोल रही हूँ, हॉस्पिटल जाके पता चला कि भाई साहब आपकी चाय में चीनी बहुत ज्यादा थी तो आपकी शुगर बढ़ गई थी. बस नहीं होता ऐसा. ये प्रिपरेटरी स्टेज की गड़बड़ है. द मिस्टेक हैपेंड इन द प्रिपरेशन स्टेज एंड प्रिपरेटरी स्टेज में यू कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी. मेंसरिया अकेले नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मेंसरिया अकेले पनिशेबल नहीं है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए. मेंस के साथ एक्टस कंपलसरी है. ठीक है. ओके सो या क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ए है. शी विल बी लायबल बिकॉज शी एक्टेड आउट ऑफ मैलिस. वेरी सिंपल. ए इज लायबल. Question number 29. A person abates an offense who abates either the commission of the offense or the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable of law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of an abater. Okay, थोड़ा confusing है, but this is the principle. Facts. A and B were friends. Differences arose between them with time when B refused to return A's money. C, who was A's wife, asked A to take revenge from B. She arranged a gun, gave it to A. Wow, what a wife. A shot B, but he survived the attack. What are the options? C is not liable as an abater. A is not liable for murder, but C is liable as an abater. A is liable for murder, but C is not liable as an abater.
A is not liable for murder and C is not liable as an abater. What do you think? क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं. ए बी फ्रेंड्स थे, बी ने मना कर दिया ए का पैसा देने से. सी ए की वाइफ है, उसने उससे कहा कि ए से बदला लो, उसने गन अरेंज की और ए को दे दी. ए और सी मैरिड हैं, ठीक है, ए और सी मैरिड हैं बाय द वे. तो उसने और ए ने बी को गोली भी मार दी और वो बच भी गया. तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ऑप्शन में कुछ गड़बड़ नहीं लग रही तुम्हें? C, who was A's wife, C is definitely liable as an abater. A is not liable for murder, C is liable as an abater. ये भी गलत है. A is liable for murder, C is not liable. All the options are wrong. A and B both, A and C both are liable. ये सारे ही ऑप्शन गलत है यार. A liable है मर्डर के लिए. अच्छा नहीं, he is liable for attempt to murder, not murder. Right. He'll not be liable for murder. He'll be liable for attempt to murder. Right. I missed that. और C abater के उसमें liable होगी. Got it. देखा, मैं भी confuse हो जाती हूँ. Attempt to murder. Yup. B is correct. A abets, therefore B survived. He could still be liable for he's liable for attempt, not the full-fledged offense. B correct. Dash regional languages are listed under the 8th schedule of the Constitution. How many languages are listed in the 8th schedule of the Constitution? I also get confused, yaar. Come on, I'm a human being. किसी के साथ भी हो सकता है. क्यों सी अबेटर कैसे नहीं हुई? सी अबेटर ही थे, उसने गन ला के दी, उसको गन दे दी. शी इज इंस्टिगेटिंग हर हस्बैंड टू commit an offense. So abatement is instigation, conspiracy or aid. $22 या 24? It's 22. 22 regional languages list हो गई हैं Constitution of India में. Good. Which of the following case is related to general offer? General offer से related कौन सा केस है? ये भी MH-CET का ही क्वेश्चन है. Maury BB, Feldhaus, Solomon, Carlyle versus Carbolic smoke ball. The correct answer is Carlyle. This is related to general offer. Maury BB capacity to contract से related है, ठीक है? Minors capacity of contract. Feldhaus Bidley is knowledge of or communication rather. Communication of acceptance. सोलोमन किससे रिलेटेड है? ये होमवर्क है तुम्हारा, और ये होमवर्क मुझे कमेंट्स में चाहिए. लेट मी नो व्हाट इज सोलोमन वर्सेस सोलोमन रिलेटेड टू. ओके, यप, डी इज करेक्ट. मूविंग ऑन. अप्लाई द लीगल प्रिंसिपल टू द फैक्ट्स गिवन बिलो. प्रिंसिपल क्या है? हुएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death, commits the offense of culpable homicide. Culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death. This is murder firstly. Culpable homicide is not murder if the offender, whilst deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation, causes the death of the person who gave the provocation. Fourth, provocation is not one which is so voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to a person. How many more questions? I don't know. I'm not sure. I think खत्म ही होने वाले हैं. ओके, सबने पढ़ लिया ये कल्पेबल होमिसाइड? टिपिकल है ये प्रिंसिपल्स. कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन दे रखी है, फिर मर्डर की डेफिनेशन दे रखी है, फिर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विच इज अ डिफेंस इन मर्डर. सो इफ अ पर्सन इज ग्रेवली एंड प्रोवोक्ड एंड ही एक्ट्स इमीडिएटली आउट ऑफ दैट प्रोवोकेशन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सारे आर्टिकल्स लर्न करने पड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं करने पड़ेंगे. ठीक है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स देख लेना, दैट्स इट. और अमेंडमेंट्स नहीं, जरूरत नहीं है. लेटेस्ट अमेंडमेंट्स देख लेना बस.
Wanda and Agatha were enemies. Once Wanda saw Agatha returning from office, she considered it a great opportunity. Wanda stabs Agatha with an intention of killing her. As a consequence, Agatha dies. Is she liable for murder? कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में ऐसा डिफरेंस है, ऐसे समझिए. जब तुमसे पूछा जाता है, लेट्स से वॉइस आ रही है, शी इज लायबल फॉर मर्डर, या ठीक है, फोन, एंड देन वी हैव सेवरल कैटेगरीज, एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो. फोन एक जनरल कैटेगरी है, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. टेलीविजन ले लो, ठीक है, तो टेलीविजन में भी बहुत सारे, मुझे तो ब्रांड्स भी नहीं पता, तो मैंने फोन लिस्ट कर दिया क्योंकि उनके ब्रांड्स मुझे पता है. तो फोन तो हो गया कल्पेबल होमिसाइड, राइट. दिस इज द ब्रॉडर कैटेगरी और द जीनस रादर, व्हाइल एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो आर द सब कैटेगरीज. और ये सब अलग अलग ऑफेंसेस होंगे. एप्पल मर्डर हो सकता है, सैमसंग डाउरी डेथ हो सकती है, वीवो डेथ बाय नेग्लिजेंस हो सकती है. तो बेसिकली अगर आपके हाथ से हत्या हो गई और आप उस हत्या को जस्टिफाई नहीं कर सकते तो वो कल्पेबल होमिसाइड है. अगर हत्या इस इंटेंशन से हुई है, किलिंग इस इंटेंशन से हुई है कि आप किल ही करना चाहते थे, डेथ हुई क्योंकि आप किल करना चाहते थे, तो वो मर्डर हो जाता है. किसी और सिचुएशन में डिपेंडिंग ऑन कि क्या असेंशियल्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑफेंस का नेचर चेंज हो जाता है. अगर डाउरी की वजह से मारा गया है तो डाउरी डेथ है, अगर गलती से मर गया है तो डेथ बाय नेग्लिजेंस है. बट ऑब्वियसली सिंस देयर इज अ डेथ which is on your hands, it is because of you that the death happened, you are responsible for it. So that is what culpable homicide is. A culpable homicide, क्या ऑफेंस बनेगा वो इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करता है. सो ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड, बट all culpable homicides are not murder. Okay, B is the correct option. Moving on, हमारे पास थोड़ा ही टाइम है, so we'll you have another class which is going to last for as long, तो we'll not do all 50 questions, थोड़े से और करेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं. In a birthday party, Dior intentionally kills Prada. Oh my god, that was not supposed to happen. Assuming that Dior was under the influence of passion excited by a provocation which was given by Bugatti, decide the nature of offense. This is murder because the provocation was given by Bugatti. This is not murder because the provocation was not given by Bugatti. Bugatti is liable for murder because he provoked Dior. Dior is liable for murder. Anyone? It is A. अच्छा, it is B. Why? Was not given by Bugatti. क्या चल रहा है ये? Provocation given by Bugatti. Decide the nature. ये तो हो ही नहीं सकता. It is absolutely contrary to what the facts are. It should be A. Although this A is correct. ठीक है, no, not the wrong option, incorrect answer actually. Options गलत हैं. This is culpable homicide not amounting to murder. But ये reasoning गलत है. This is not murder. These options are wrong. I hate when this happens. Cannot do anything about it. Iron Man and Batman were enemies. Once Iron Man saw Batman returning from office, he considered it a great opportunity to get rid of Batman. Stabs with an intention of hurting him. As a consequence, Batman dies. Is he liable for what is he liable for? Because the
questions are wrong. He is not liable for murder. He is liable for culpable homicide not amounting to murder. क्योंकि grave and sudden provocation है, और requirement कहीं भी ये नहीं कहता है कि grave and sudden provocation victim से ही आना चाहिए, किसी से भी आ सकता है. He'll be liable for culpable homicide, but he'll not be liable for murder. Yes, because he did not stab with the intention of hurting him, not with the intention of causing death. So, he is liable for culpable homicide. Okay. Explanation में option B है, लेकिन आंसर गलत दे दिया है. चलो, question 35. What does the maxim de minimis non curat lex mean in law? Necessity knows no law. Law does not govern trifles. Children are incapable of committing a crime. Injury without damage. What do you think? Maxim de minimis non curat lex means law does not govern trifles. लंबा ब्रेक ले लिया मैंने थोड़ा सा. इंटेंट हर्ट करने का था. ठीक है. कल्पेबल होमिसाइड मर्डर तभी है जब इंटेंशन किल करने का है. तो अगर हर्ट करने का इंटेंशन है और हर्ट से कोई मर गया तो मर्डर के लिए लाइबल नहीं होते. ओके. लॉ डज नॉट गवर्न ट्रिफल्स, मतलब छोटी मोटी चोट पे लॉ ध्यान नहीं देता. दैट इज मोर ओवर सेंसिटिविटी. वी आर ओनली डूइंग 4 more questions. 40 questions करेंगे, उसके बाद बस. When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called what? The answer is पीछे चला गया. मुझसे गलती हो गई. It's called consideration. I'm sorry, I got flustered. It's called consideration according to section 2D, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence is called promise, is called consideration for the promise. Okay. Chalo, according to Hindu Succession Act 1956, property of the female Hindu dying intestate shall devolve. These are the heirs. Determine the sequence. Very, very difficult question. If you know the answer to this, it's okay. हाँ, you're correct. If you know the answer to this, it's okay. Otherwise, I'll tell you the answer. The correct answer is A. The sequence is 1, 2, 3, 4. So, property इसी sequence में devolve होती है. सबसे पहले sons और daughters को जाती है, including the children of predeceased son and daughter, मतलब पोता या पोती and husband. These are called the class 1 heir. फिर उसके बाद अगर क्लास 1 एयर में कोई है नहीं, जैसे हस्बैंड नहीं है और बच्चे भी नहीं बचे हैं, तो हस्बैंड के एयर्स पे जाती है. फिर उसका डेवोल्यूशन अलग है, क्लास, उनकी क्लासेस अलग है. उसके बाद अगर हस्बैंड भी नहीं है और एयर्स भी नहीं है, क्लास 3 इज मदर एंड फादर, मतलब लड़की के पेरेंट्स, नॉट हस्बैंड के पेरेंट्स. फिर उसके बाद अगर अपने पेरेंट्स नहीं है तो फिर फादर के एयर पे, मतलब हम मेरे फादर के एयर पे, उनके बच्चे, मतलब भाई बहन या फिर जो भी है. लास्टली अपॉन द एयर्स ऑफ मदर. So this is the correct sequence. Okay, A is the correct answer. This was asked once very long time back.
ज़रूरी तो बिल्कुल भी नहीं है कि रिपीट हो जाए. अगेन लाइक आई सेड, अगर इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो इफ़ यू know about it, good. If you don't know about it, you can take a guess or you can just leave it. These are some questions that need to be skipped. A woman married under Muslim law is entitled to obtain divorce on the following grounds: that the whereabouts of the husband have not been known for a period of 4 years, husband has neglected or failed to provide for maintenance for 2 years, husband has been sentenced to imprisonment for 7 years or upwards, husband has failed to perform without reasonable cause his marital obligation for 3 years. ये रीजन है या फिर ये ग्राउंड्स हैं जिस पे एक मुस्लिम वुमन डिवोर्स ले सकती है अपने आप से. ये लॉजिकल के क्वेश्चन धनंजय, मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी. ये भी कंडीशंस है. हस्बैंड वाज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज, कंटिन्यूज टू बी सो. Husband has been insane for a period of 2 years, suffering from leprosy or virulent venereal disease. That she has been given in marriage by her father, other guardian, before she attained the age of 15 years. Repudiated the marriage before obtaining the age of 18 years. Okay. Chalo, moving on. Mr. X, Mrs. Y, Muslim couple who have been married for 4 years. After 4 years, X was convicted of murdering his friend, sentenced to 12 years. Decide whether Y can claim divorce. Of course, right? 7 years से अगर ऊपर की सजा है तो Y can claim divorce because he has been convicted for an offense. अब देखो 7 years है कि नहीं. Y can claim divorce because he has been sentenced to 12 years. Yes. B is correct. Any pronouncement of talaq by a Muslim husband upon his wife in any form whatsoever is considered void and illegal. We're talking about talaq biddat, so that has been declared illegal and void. Mr. A, Mrs. B, Muslim couple have been married for 4 years. Differences arose between the couple. A's parents came to reside with them due to their old age. Parents did not like B, made her life miserable, forcing her to request money from her parents. वाह क्या old age है. Who knew about this behavior supported them, often harassed B to extract money. When B failed to fulfill, A pronounced talaq. Decide. Talaq by A lacks legal backing, hence it is void. By A is valid but illegal. Neither void nor illegal holds legal validity. What do you think is correct? B is correct. ओके, कंपनी लॉ नहीं आएगा. बी इज करेक्ट. लीगल बैकिंग नहीं है. तलाक बिद्दत को कहीं से भी लीगल बैकिंग नहीं है. ओके, सो या लास्ट क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डे. नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिटरी और academic distinction shall be conferred by the state. This is Article 18. Community of Icelanders wanted to be secluded from the rest of the world, including state X, in whose territory they fell into. After many failed attempts, the government of X gave up on their attempts to educate the community, create awareness. One Mr. X, a journalist, went to the island, convinced them to be part of state X. X's awareness programs and beneficial scheme. Mr. X's attempt was highly appreciated and they gave them a title of Sultan of that community. The title was criticized and various PILs were filed in the Supreme Court. Decide. The title is invalid because it is not a military or academic distinction. It is valid because it is a military distinction. It is an academic distinction. It is neither of the two. ये ना तो military distinction है ना ही academic distinction है. तो ये title valid नहीं है. A is correct. ठीक है? Okay, so that's it for today. We have done 40 questions. 40 questions बहुत होते हैं. ज़्यादातर इसमें से वो questions थे जो हम पहले भी कर चुके हैं. कुछ क्वेश्चंस MH-CET के हैं. Like I said, it's a mix amalgamation of a lot of things, right? So, but they do offer you a good enough practice, right? So I hope you have learned from these questions certain other things that I have told you in between the lecture. Also be confident about the exam tomorrow. Legal reasoning उतना difficult नहीं आएगा. MH-CET legal reasoning को लेकर बहुत ज़्यादा
हाई एंड नहीं जाते हैं. Okay, so you don't have to worry about it. Just make sure that you are properly practicing logical even towards the end, and if you have practiced logical enough, you're good to go. So इसके बाद GK की क्लास है in some time, actually in just 28 minutes I suppose. 38 of it's a very good scores. हाँ, थोड़ी देर में GK की क्लास है. Again, it is also a marathon kind of a session. We have our legal analysis tomorrow. The exam analysis tomorrow, and it would start from 11. Okay, so पहले slot के बाद जो analysis है वो 11 बजे होगा, और सब यहाँ आ जाइए. मतलब YouTube पे tune into YouTube if you are in the first slot. The second analysis is going to be conducted at 6. Wait, let me confirm again. Sorry, first analysis is at 1 p.m. not 11. I was wrong. First analysis is at 1 p.m. and the second one is at 6 p.m. Right, so whatever slot you have been allotted in your admit card, see accordingly. First और second slot के accordingly आप अपना analysis attend कर सकते हैं. Make sure that you are there so that you have an idea कि exam में कैसा perform किया. Gives you a confidence, right? हाँ, वही 1 बजे है. My mistake. 1 बजे का है analysis. Drinking alcohol, rashly driving, differences. I don't know. मतलब ड्रिंकिंग अल्कोहल मतलब अल्कोहल कंज्यूम करना, और रैश ड्राइविंग मतलब रैश ड्राइविंग. यू आर आस्किंग मैम खाना खाने में और चलने में क्या अंतर है? यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन. खाना खाने में और चलने में बहुत अंतर है. दीज आर टू सेपरेट एक्टिविटीज, जस्ट लाइक ड्राइविंग रैशली एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल. If you connect them both, then it becomes an offense, right? The paper is actually questions का वो difference हो जाता है, sequence अलग हो जाता है, but the kind of questions remain more or less the same. Okay, so guys, it's not the same. राइट, नो, मोर और लेस सेम ही रहता है, एकदम सेम नहीं होता है, ऊपर नीचे डिफरेंस हो जाता है. सो एवरीवन प्लीज बी प्रिपेयर्ड और बी रिलैक्स्ड, टेक इनफ रेस्ट. अब इन सेशंस के बाद आई वुड सजेस्ट डोंट study anything, don't practice anything, just go to sleep. You need a lot of sleep, and all the best from my end. अच्छे से करना, be confident about it. You're going to perform amazingly. I am completely confident about that. Okay guys, thank you so much. Take care. Bye bye.